Hi everyone, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. My name is Pankaj Dhingra, and as you all know me by now, I am a proud FinTrammer. Welcome friends, welcome to a session wherein we would be covering in terms of what is really happening in CPA from the 2024 standpoint. बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चिंता में हैं in terms of कि अब CPA को 2024 में अगर हमें करना है तो हमें क्या क्या चीजों के बारे में पता होना चाहिए। सर बहुत सारा सुनने में आता है, सर काफी सारे चेंजेस हो गए हैं, सर हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, सर ये जो चेंजेस हुए हैं ये एक्चुअली में हैं क्या, हमें कैसे इम्पैक्ट करेंगे। एंड ऑफ कोर्स आई वुड रियली लाइक टू नो सर कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं इनका एग्जामिनेशन, लाइसेंशियर या फिर मेरी प्रिपरेशन पे क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट है। तो चलो आज का सेशन हम इसी को डेडिकेट करते हैं, हम इसी बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे बच्चे आज कि सीपीए 2024 में एक्चुअली में हो क्या गया है। और जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो वी विल आल्सो टॉक ऑन कि अच्छा कंसिडरिंग दिस अब आपकी बच्चे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एंड व्हाट इज द मंत्रा टू बी सक्सेसफुल इन दिस एग्जाम। तो चलें आप आगे बढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ थिंग्स दैट वी have in store today. But before we'll go in there, अगर आपको ऐसे CPA से related या global courses से related बहुत सारे और videos चाहिए तो do subscribe to our channel. We would be coming up with many more videos like this. All right. So now moving on, I will be coming up with a slide over here just to make sure that we have some rule to the madness, to make sure that we have some boundaries to be discussed and to be taken up. अच्छा बच्चे, हम जो आज का प्रिपरेशन रहने वाला है, जो आज का कंटेंट रहने वाला है, ये बच्चे मैंने दो पर्सपेक्टिव से कवर करने की कोशिश करी है। एक उन बच्चों के लिए जो यूएस सीपीए के बारे में अब सोच रहे हैं, अब यूएस सीपीए के बारे में एनरोल होना चाहते हैं, यूएस सीपीए में जाना चाहते हैं, एक उन बच्चों को के लिए हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा बच्चे हम उन बच्चों के लिए भी डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी सीपीए में एनरोल्ड हैं, शायद उनका एक पेपर क्लियर हो गया हो, 2 हो गए हो, 3 हो गए हो, या शायद कोई भी ना हुआ हो, और उनको अब आगे क्या स्ट्रैटेजी रखनी है हम उस बारे में भी बात करेंगे। तो हम दोनों पर्सपेक्टिव पे डिस्कस करेंगे जस्ट टू मेक श्योर दैट none of them feel as if they have not been covered or their queries have not been covered. बट बच्चे अगर इस पूरी डिस्कशन में आपको कोई भी क्वेरी आपके मन में आती है या कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में आता है या कोई क्वेश्चन आपको लगता है जो मैं आंसर करूं, तो आप जरूर से उसको लाइव चैट में लिखो। तो जस्ट गो एंड ऑन द यूट्यूब एंड टाइप ऑन ए चैट. I'll be picking up towards the end all of those questions and will try to answer that, ताकि आपके वो सारे डाउट अच्छे से रिमूव कर पाए। तो चले आगे चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं बच्चे यूएस सीपीए 2024 में होने क्या वाला है। बेटा ये जो स्लाइड मैं आपके सामने लेके आया हूँ, एंड आई एम श्योर मेनी ऑफ यू वुड हैव हर्ड दिस इफ नॉट लाइक इन टोटलिटी, बट काफी चर्चा हुई है इस स्लाइड पे या इस टॉपिक पे। तो बच्चे मैं ना इसको एक स्टार्ट ऐसे ही करना चाहता हूं कि मैं एक नटशेल में आपको ये बता पाऊं कि ये जो चेंजेस हैं बच्चे ये हैं क्या। सीपीए में बच्चे आज तक, अगेन मैं बात कर रहा हूं 2023 तक, सीपीए में 4 एग्जाम होते थे बेटे। ऑडिट का जो कि नॉर्मल ऑडिट है, एज एन ऑडिट हम जो करते आ रहे हैं वही ऑडिट हम लोग सीपीए में भी पढ़ेंगे, बट ऑफ कोर्स यूएस गैस के स्टैंड पॉइंट से, यूएस जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के स्टैंड पॉइंट से, बिकॉज आप यूएस की क्वालिफिकेशन ले रहे हो तो बेटे आपको यूएस के बारे में समझना है और यूएस के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में समझना है। तो ऑडिट में हम यूएस में जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स काम करते हैं हम उन्हें पढ़ते हैं एज फार एज सीपीए करिकुलम इज कंसर्न। बिल्कुल ठीक है सर। दूसरा सब्जेक्ट जो होता है वो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, जो बेसिकली फार बोलते हैं हम इसे, जिसके अंदर हम अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग से रिलेटेड एरियाज पढ़ते हैं। अगेन इन ए कॉमन पैरेलेंस अगर मैं बात करूं, अकाउंटिंग रिपोर्टिंग हम सब इंडिया में या अपनी अपनी कंट्रीज में देखते आ रहे हैं या करते आ रहे हैं। सीपीए के अंदर जो हम फार पढ़ते हैं वो यूएस गैप बेस्ड होता है, यूएस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। ठीक है सर। तो एक सब्जेक्ट है बच्चे ऑडिट, एक सब्जेक्ट है फार, और तीसरा सब्जेक्ट है बेटे रेगुलेशन, विच इज नथिंग बट द टैक्सेशन। जैसे आप इंडियन टैक्सेस पढ़ते हैं ऐसे हम यूएस टैक्सेस पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे बेटे ऐसे कौन कौन से एसएससीज होते हैं, टैक्स स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, टैक्स रेट्स क्या होते हैं, रिबेट्स क्या होते हैं, रिलीफ्स क्या होते हैं,
क्या, अगर आप यूएस में टैक्सेबल होते हो तो आपको टैक्सेस क्या देने पड़ सकते हैं, कौन से आपको फॉर्म्स भरने पड़ सकते हैं, कौन से आपको रिटर्न्स भरनी पड़ सकती हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये सारी चीज हम रेगुलेशन में कवर करते हैं बेटा। ये 3 एग्जाम जो मैंने बात करी, ये 2023 तक भी आप देते थे और 2024 में भी आप देने वाले हो। एक चौथा एग्जाम 2023 तक है बेटे, वो है बीईसी, विच इज नथिंग बट द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कॉन्सेप्ट। जो बच्चे ऑलरेडी सीपीए में रजिस्टर्ड हैं, मेनी ऑफ यू वुड हैव हर्ड बीईसी और यू वुड हैव गिवन बीईसी। तो बीईसी करके एग्जाम है जो बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स का एक मिक्सचर होता था या होता है, अगर मैं 2023 की बात करूं, जो आपको देना होता है। तो 4 सब्जेक्ट होते थे, ऑडिट, रेगुलेशन, फार और बिजनेस। ये मैं बात कर रहा हूं बच्चे 2023 तक की। बट सर हमें तो जानना है सर कि 2024 में क्या होने वाला है सर, तो उस पर भी आते हैं बेटे। अब इन 4 सब्जेक्ट में से बेटे 3 सब्जेक्ट जो कि ऑडिट, रेगुलेशन और फार है बेटा, ये कोर एग्जाम है जो रहेंगे 2024 में भी। अगेन इनमें कुछ कुछ चेंजेस आए हैं, विल टॉक ऑन दैट इन अ व्हाइल। बट ये 3 एग्जाम बच्चे आपके कोर एग्जाम हो गए हैं जो आप सबको देने हैं, जिसमें कोई चॉइस नहीं है। पहले भी कोई चॉइस नहीं था, कोई चॉइस नहीं है इन 3 में, आपको ये 3 एग्जाम देने ही देने हैं। ये 3 को अब कोर एग्जाम कहा जाएगा 2024 ऑनवर्ड्स। ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है, नो प्रॉब्लम। सर बीईसी का क्या हुआ? बीईसी को बेटे हमने नमस्ते कर दिया है, अब बीईसी का एग्जाम 2024 ऑनवर्ड्स नहीं हुआ करेगा। उसकी जगह एआईसीपीए ने हमें 3 डिसिप्लिन एग्जाम्स दे दिए बेटा, उसमें से एक एग्जाम को सिलेक्ट करना है। वो सर वो 3 डिसिप्लिन एग्जाम कौन से हैं, चलो उस बारे में बताओ। वो 3 डिसिप्लिन एग्जाम है, जैसा आप स्लाइड पे देख भी पा रहे हो, वो 3 डिसिप्लिन एग्जाम है। आईएससी, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कंट्रोल। अभी हम थोड़ी देर में आएंगे इसके ऊपर, क्या इसके अंदर क्या है, विल टॉक ऑन दैट। बट जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, एग्जाम है आईएससी का, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कंट्रोल। फिर है बच्चे बार, बिजनेस एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। और फिर है बच्चे टीसीपी, टैक्स कंप्लायंस एंड प्लानिंग। ये 3 डिसिप्लिन एग्जाम उन्होंने निकाले हैं बीसी की जगह। बीसी अब नहीं है, बीसी की जगह ये 3 एग्जाम है जो कि डिसिप्लिन एग्जाम है, जिसमें से किसी भी बच्चे को एक एग्जाम चुनना होता है, एक एग्जाम देना होता है। तो पहले 3 एग्जाम एज इन द ऑडिट, रेगुलेशन और फार, ये तो हम पहले से देते आ रहे थे, ये अभी भी रहेंगे, इन्हें हम कोर एग्जाम कहेंगे। और 3 नए डिसिप्लिन एग्जाम ऐड हो गए हैं, जिसमें से एक चूज करना होता है और आपको वो क्लियर करना होता है और आगे बढ़ चलना होता है। बस यही सीपीए इन 2024 के बारे में बच्चे आपको समझने की जरूरत है कि अब हमारे एग्जाम तो बच्चे 4 ही हैं, जैसे पहले 4 होते थे अब भी 4 ही हैं, बट अब 3 कोर एग्जाम है, एक डिसिप्लिन एग्जाम है। जो 3 कोर एग्जाम है बेटा वो पहले जैसे ही हैं, ऑफ कोर्स कुछ चेंजेस हुए हैं, विल टॉक ऑन दैट इन अ व्हाइल। बट 3 जो डिसिप्लिन एग्जाम है उसमें से मुझे एक चूज करना है। अब हम इस बारे में ना बहुत सारी और भी चर्चा करेंगे और बहुत सारे और वीडियोस आएंगे, बहुत सारी और लाइव डिस्कशंस भी करेंगे, जहां पे हम ये भी समझेंगे कि किस बच्चे को कौन सा डिसिप्लिन एग्जाम बच्चे देना चाहिए। अगर आप इसके बारे में भी जानना चाहते हो या किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे डिस्कस करना चाहते हो तो उसको भी चैट में जरूर लिखो, and of course do reach out to us and we'll be more than happy to help you, or of course come back with a new video also onto the same। ठीक है बेटे, आगे चलें। ये अभी तक की बात क्लियर होती है इन टर्म्स ऑफ कि सीपीए 2024 में है क्या? बिल्कुल होती है सर, एटलीस्ट ब्रॉड लेवल अंडरस्टैंडिंग तो बिल्कुल क्लियर मिल जाती है सर। जो कोर एग्जाम होते हैं उनके अंदर क्या होता है और जो डिसिप्लिन एग्जाम होते हैं उनके अंदर क्या होता है, अगर आप नटशेल में बताओ तो बच्चे कोर एग्जाम जो है ना, वो मैं ये बोलूंगा तो ना, वो इंट्रोडक्टरी कंटेंट फाउंडेशनल कंटेंट रखते हैं। अब एडवांस्ड कंटेंट को ना उन्होंने मूव कर दिया है इन सब्जेक्ट से डिसिप्लिनरी एग्जाम्स में। वो बेसिकली ये चाहते हैं कि जो बेसिक ऑडिट या रेगुलेशन या फार के बारे में आपको पता होना चाहिए ना, उन्होंने वो कोर के अंदर रखा हुआ है। बट जो इनका एडवांस्ड कंटेंट है ना, जो इनका आई वुड से टॉप मोस्ट कंटेंट है या डिफिकल्ट कंटेंट है, उसको उन्होंने डिसिप्लिन एग्जाम में डाल दिया है एज ए स्पेशलाइजेशन, कि आप स्पेशलाइज कर सकते हो उस स्पेसिफिक एरिया में, चाहे टैक्स में करो, चाहे रिपोर्टिंग में करो या आईएससी में करो। सो आई वुड से इंटरमीडिएट या इंट्रोडक्टरी कंटेंट जो है वो कोर एग्जाम में है और एडवांस्ड कंटेंट जो है वो डिसिप्लिन एग्जाम में है। पर डिसिप्लिन में से मुझे सिर्फ एक ही चूज करना होता है, 3 कोर एग्जाम तो हम सबको बच्चे देने ही है।
बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। अब हम चलते हैं बच्चे, जो बच्चे ऑलरेडी, ये तो देखो ये स्लाइड तो उनके लिए रेलेवेंट भी है जो नए सिरे से अब रजिस्टर कर रहे हैं। अब उन्हें पता है कि मैंने 3 कोर एग्जाम देने हैं, 1 डिसिप्लिन एग्जाम देना है और आगे बढ़ चलना है। बट उन बच्चों के लिए जो बच्चे पहले से आ रहे हैं, उन्हें ये जानना है सर कि अब सर मुझे ये बताओ कि कोर एग्जाम में क्या चेंजेस हुए हैं, या हमें, क्योंकि हम तो कोर पढ़ते आ रहे हैं पहले से, अभी हमने पेपर नहीं दिए बट हम पढ़ते आ रहे हैं, तो कुछ चेंजेस हैं इसमें? तो चलो बिल्कुल इस बारे में बात करते हैं। बच्चे जो ऑडिट आप पहले पढ़ते थे, वो सारा का सारा ऑडिट ना ऑलमोस्ट सेम है। मैं अगर ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट की बात करूं तो ऑडिट ना मुझे ऐसा लगता है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो AICPA ने सबसे कम चेंज किया है। उन्होंने ऑलमोस्ट 95% ऑडिट को ना बच्चे सेम रखा है। कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट थे जो IT रिलेटेड थे, जो ऑडिट में काम आएंगे फ्रॉम द ऑडिटिंग द IT इन्वायरमेंट स्टैंड पॉइंट, उन्होंने उसको ऐड कर दिया बच्चे ऑडिट के अंदर। बट अगर मैं कॉन्टेक्स्ट की बात करूं ऑन दी ओवरऑल बेसिस, तो 95, 97, 98% ऑडिट बच्चे सेम है। कोई खास चेंज है ही नहीं किसी भी मॉड्यूल में। मॉड्यूल 1 और 2 में थोड़े से चेंजेस आपको देखेंगे बट बहुत ही माइन्यूट हैं। ब्रॉडली बच्चे ऑडिट स्टैंड्स टू बी द सेम व्हाट यू यूज्ड टू डू और यू हैव डन इफ यू हैव डन दैट। कुछ IT कॉन्सेप्ट जो उन्होंने BC से ले लिए वो उन्होंने अब ऑडिट में ऐड कर दिए। बात समझ में आती है बच्चे? बिल्कुल आती है सर। अब हम बात करते हैं बेटे फार की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। जो बच्चे फार की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने तैयारी करी या कर रहे हैं या पहले से पढ़ते आ रहे हैं, उनके लिए ना बेटा अब एक बहुत गुड न्यूज है। वो ये कि 2024 में ना बेटा फार अप्रोक्सीमेटली, आई वुड से अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% कम हो गया बेटा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा एडवांस्ड जो कंटेंट है ना बच्चे फार का, उसको उठा के ना बार बना दिया है। तो गवर्नमेंटल अकाउंटिंग, लेसर अकाउंटिंग, सम ऑफ द एरियाज ऑफ जो स्पेसिफिक यूएस गैप्स हैं जो थोड़े से टफ है, वो उन्होंने यहां से उठा लिया है, फार से उठा के उन्हें बार में डाल दिया। तो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, इसलिए मैंने बोला एडवांस्ड एरियाज को वो लोग बार में ले गए हैं और फार जो है वो थोड़ा कम हो गया है। और उन्होंने बहुत ही माइन्यूट, आई विल से थोड़ा स्प्रिंकलर ही डाला है। कुछ जो BC के कॉन्सेप्ट जो फार से रिलेटेड थे उन्होंने फार में ऐड कर दिया। बट मैं अगर होलिस्टिक बेसिस पे बात करूं बेटा, तो फार जो है वो अप्रोक्सीमेटली 30-40% कम हो गया बेटा जो पहले था। तो जो बच्चे फार दे रहे हैं या देना चाह रहे हैं 2024 में, और उन्होंने तैयारी ऑलरेडी शुरू कर दी है, तो उनके लिए गुड न्यूज है बेटा कि आपको ना अब कम तैयारी करनी पड़ेगी। 30-40% बच्चे कम पढ़ना पड़ेगा। अब ये नंबर बेटा 30-40 भी बोल सकता है, कोई 25 भी बोल सकता है। जितना मैंने रिसर्च किया दोनों सिलेबस एरियाज को, मुझे लगता है अप्रोक्सीमेटली 30-40% की मेहनत कम हो गई है बेटा फार में एज कंपेयर टू व्हाट इट यूज्ड टू बी बिफोर। बात समझ में आती है बेटा? बिल्कुल आती है। अब हम आते हैं बच्चे रेगुलेशन पे। देखो हमने तीनों कोर सब्जेक्ट को कवर किया है जस्ट टू मेक श्योर दैट हमें एक पर्सपेक्टिव मिल जाए कि सर इन कोर सब्जेक्ट्स के अंदर चेंजेस क्या आए हैं। अगर बच्चे मैं रेगुलेशन की बात करूं इन टर्म्स ऑफ जो रेगुलेशन 2023 तक है एज कंपेयर टू जो अब होगी, तो एक गुड न्यूज आप सबके लिए रेगुलेशन में भी है कि रेगुलेशन का भी जो कंटेंट है बेटा वो अब अप्रोक्सीमेटली 30% कम हो गया है एज कंपेयर टू व्हाट इट यूज्ड टू बी, बिकॉज वो थोड़ा सा जितना भी एडवांस्ड कंटेंट था ना उसको उठा के बेटा ले गए हैं और उन्होंने टैक्स कंप्लायंस एंड प्लानिंग बना लिया। अगर आपको डिटेल एरिया जानने हो ना बच्चे की कौन सा फार्म से निकल के बार में गया है या रेगुलेशन से निकल के TCP में गया है, तो डू मैसेज मी और इन द चैट बॉक्स। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेल यू ऑल ऑफ द एरियाज दैट हैव गॉन फ्रॉम फार टू बार और फ्रॉम रेगुलेशन टू TCP, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको उसका पूरा आइडिया मिल जाए। बट नेट बच्चे गुड न्यूज है हम सबके लिए कि ऑडिट ऑलमोस्ट सेम है। फार और रेगुलेशन की तैयारी अब सर हमें 30-40% कम करनी पड़ेगी सर, कम मेहनत करनी पड़ेगी सर, हम जल्दी CPA बन सकते हैं। एब्सोल्युटली यस माय फ्रेंड, दैट इज व्हाट यू कैन एंड दैट इज व्हाट यू वुड बिकम। और एक गुड न्यूज हर FinTram स्टूडेंट के लिए है, just to make sure that I'm just not forgetting that। बच्चे अगर आपने FinTram के साथ अपनी CPA जर्नी शुरू करी है और आपके पास पुराना कंटेंट था या है,
तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है बेटा। फिनट्रैम आपको नया कंटेंट, जो ऑडिट, फार और रेगुलेशन का कंटेंट है, वो सारा का सारा नया कंटेंट प्रोवाइड करेगा, एंड एवरीथिंग इज कमिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, सो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा। ऑडिट, फार और रेगुलेशन का जो रिवाइज्ड कंटेंट है आप सबको मिलेगा बच्चे, एंड यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट। Isn't that an excellent news? Yes, sir. आगे चले, in terms of what all things that we really wanted to cover from the discipline exam standpoint. बिल्कुल सर, तो चलो इस बारे में बात करते हैं। अगर मैं डिसिप्लिन एग्जाम की बात करूं सर, हमने कोर एग्जाम के बारे में तो समझा कि जो कोर एग्जाम है ना उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, हमने समझा सर फार में, हमने समझा ऑडिट में, हमने समझा सर रेगुलेशन में, हमने ये चीज समझ ली सर कि क्या चीज चेंज हो रही है। अब हम समझते हैं सर डिसिप्लिन एग्जाम के स्टैंड पॉइंट से क्या हो रहा है। सर हमें पता है ये तो नए हैं सर, ये तो नई चीज आके जुड़ गई ना हमारे साथ, हमने तो डिसिप्लिन एग्जाम कभी देखे ही नहीं थे, ये तो नए डिसिप्लिन एग्जाम आ गए हैं जिसमें से हमें एक चूज करना है। अब थोड़ा सा बताओ कि इसका कंटेंट क्या है, इसके अंदर है क्या एक्चुअली में। तो चलो इस बारे में बात करते हैं। बच्चे सबसे पहला जो सब्जेक्ट है, अगेन मैं ये पहला और दूसरा बोलता हूं बेटे, बट सीपीए के अंदर चाहे वो कोर हो चाहे वो डिसिप्लिन हो, आप कोई भी एग्जाम किसी भी सीक्वेंस में ले सकते हो बेटे, कोई सीक्वेंस नहीं होती है। तो जो आपको ठीक लगे, जो इसमें आपकी हिम्मत लगे करने की, आप वो एग्जाम लो और आगे बढ़ चलो। तो सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन सा एग्जाम मुझे पहले लेना है। तो आई एम जस्ट पिकिंग अप जस्ट फॉर द एक्सेक कि मुझे कहीं से तो शुरू करना है। तो मैं आईएससी की बात करता हूँ, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कंट्रोल की। जो हमारे बच्चे थोड़ा सा ना आईटी को लाइक करते हैं या रट्टे को लाइक करते हैं, बिकॉज मुझे लगता है आईएससी इकलौता ऐसा एग्जाम है जिसमें ना रट्टाफिकेशन थोड़ी ज्यादा है, आपको ज्यादा करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता आप बार में या टीसीपी में आपको कुछ भी रटने की जरूरत है, बट आईएससी क्योंकि बिल्कुल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी आपको एरियाज रेलिवेंट है फ्रॉम द फाइनेंस स्टैंड पॉइंट, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो आपको बेसिकली आईटी इन्वायरमेंट, आईटी कंट्रोल्स, आईटी सिस्टम्स, आईटी ऑडिट, वो सारी चीजें आप आईएससी में पढ़ने वाले हो। मैं अगर इसका बैकग्राउंड की बात करूं तो बहुत सारा आईएससी का जो कंटेंट है ना वो करंट बीईसी से उठा है। तो ये एक गुड न्यूज है बच्चे, उन सब बच्चों के लिए जो बीईसी की तैयारी कर चुके हैं बट बीईसी का एग्जाम दे नहीं पा रहे हैं या देना नहीं चाह रहे हैं किसी भी कारण से। तो बच्चे जो आपने कॉन्सेप्ट बीईसी में पढ़े हुए हैं ना, इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड, वो सारा आईएससी में आ जाता है, वो काफी सारा आईएससी का पार्ट है। तो आप आईएससी को उस तरह से भी देख सकते हो। और कुछ ऑफ कोर्स उन्होंने न्यू आईटी कॉन्सेप्ट्स डाले हैं, साइबर सिक्योरिटी हो गया, कॉन्फिडेंशियलिटी एलिमेंट हो गया, साइबर अटैक्स हो गया, साइबर कंट्रोल्स हो गया, सिस्टम कंट्रोल्स हो गया, वो बहुत सारी चीजें उन्होंने डाली आईएससी के अंदर, जस्ट टू मेक श्योर दैट आपके पास एक होलिस्टिक व्यू आ जाए बच्चे, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू बीइंग द फाइनेंस हेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और आपको पता हो कि अगर मैं फाइनेंस हेड हूं तो मुझे बेटे इंफॉर्मेशन सिस्टम और कंट्रोल को कैसे डील करना है। बात समझ में आती है बेटा? बिल्कुल आती है। अगेन ये मैं फिर बता रहा हूं बच्चे, डिसिप्लिन एग्जाम 3 है, मुझे सिलेक्ट सिर्फ एक करना है। मैं जानकारी तीनों की दे रहा हूं बच्चे, आपने सिलेक्ट सिर्फ एक करना है। और अगर किसी बच्चे का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है बेटा किसी भी डिसिप्लिन एग्जाम से, तो प्लीज write it in the chat box. I'll be more than happy to pick it up and answer your specific query too. मैं इस पीपीटी के एंड में नंबर भी प्रोवाइड कर रहा हूं बेटा, अगर किसी की कोई पर्सनल क्वेरी है किसी सब्जेक्ट को लेके या किसी कंटेंट को लेके, तो डू रीच आउट टू अस. FinTram is more than happy to help you in I would say in your journey for becoming an expert in the CPA exam. Is that clear? Yes sir. अब दूसरे एग्जाम की बात करते हैं बच्चे, which is बार, बिजनेस एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। जो बार का एग्जाम है बच्चे, इसके अंदर इफेक्टिवली ना हम अगेन वी कैन गो टॉपिक वाइज, बहुत सारे टॉपिक है जिन्होंने फार से लिए, आई कैन गिव यू द लिस्ट ऑफ दैट, बट आई थिंक व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू इज कि काफी सारी चीजें ना इन्होंने जो फार में थी ना, जो विच रियली रिक्वायर गुड अमाउंट ऑफ टेक्निकलिटी, वो सारा उठा के ना इन्होंने बार में डाल दिया। एंड ऑफ कोर्स इन्होंने कुछ कंपोनेंट जो बीसी में होता था, जो प्राइमरली कॉस्टिंग से रिलेटेड था, उसको भी उठा के इन्होंने बिजनेस एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग में डाला, बिकॉज दैट गोज वेल, राइट? when you're doing business analysis, when you're doing business reporting, so having those costing aspect really helps, right? So इन्होंने उस एरिया को भी बीसी से निकाल के बार के अंदर डाल दिया। तो आई वुड से मोस्ट एडवांस्ड वर्जन ऑफ फार ले लिया, primarily governmental accounting है, some of the critical areas है, we can talk on that, but BEC का भी एक important component ले लिया जो कि I would say more on the costing side है, which helps you to review the performance of an organization.
ऐसे बनाया इन्होंने बच्चे बार। अब आते हैं बेटा टीसीपी क्या है सर? सर टैक्स कंप्लायंस एंड प्लानिंग सर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। बिल्कुल नहीं है बेटा, बिल्कुल भी नहीं है। टैक्स कंप्लायंस एंड प्लानिंग भी रिमेनिंग पोर्शन ऑफ रेगुलेशन है, एडवांस्ड पोर्शन ऑफ रेगुलेशन है, जो उन्होंने एक आई वुड से सेपरेट एग्जाम बना दिया है। टेक्निकलिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, बट अगर कोई बच्चा स्पेशलाइजेशन करना चाहता है यूएस टैक्सेस में या यूएस टैक्स कंप्लायंसेस में, तो बेटा टीसीपी एग्जाम उसके लिए बहुत रेलेवेंट हो जाता है। ये 3 एग्जाम है बच्चे, आईएससी, बार और टीसीपी, जिसमें से एक आपको बच्चे सिलेक्ट करना होता है और आगे बढ़ चलना होता है। बात समझ में आती है बेटा? बिल्कुल आती है सर। अच्छा, अगर मेरी बात समझ में आ रही है और अगर मेरी बात अच्छी भी लग रही है, तो फिर मुझे लाइक क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? तो फटाफट से पहले एक बार लाइक दे दो मुझे भाई, मुझे तो वहीं से मोटिवेशन मिलता है ना। फटाफट से एक बार लाइक दे दो, ताकि फिर हम अगली स्लाइड पे चलें और अगले अगले टॉपिक पे डिस्कस करें या अगले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डील करें इन टर्म्स ऑफ व्हाट दैट इज। फटाफट से लाइक करो, मैं देख रहा हूँ कितने लोगों ने लाइक किया। नहीं किया तो नालायक हो, बहुत बहुत जोर की पिटाई होने वाली है। वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी बता दो मुझे। अगर मैं अब अगली स्लाइड की बात करूं बेटे, तो इस स्लाइड पे हम बात करेंगे कि सम ऑफ द की पॉइंट्स जो आपको 2024 एग्जाम के स्टैंड पॉइंट से पता होने चाहिए। वो ये कि बच्चे 2024 में बीईसी हमारे पास है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है सर, ये तो बिल्कुल क्लियर हो ही गया सर कि हमें बीईसी अब है ही नहीं, तो हमें बीईसी अब देना ही नहीं है, तो वो पॉइंट खत्म हो जाता है, तो हमें उसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज कि बच्चे अब भी आपको सीपीए के एग्जाम में क्लियर होने के लिए 75 मार्क्स मिनिमम चाहिए। पहले भी चाहिए थे, अब भी चाहिए। 100 में से 75 मार्क्स चाहिए टू क्लियर द एग्जाम and go ahead and move on. Do not forget that. That is again something to be known. Another point, any exam can be chosen. There is no sequence. चाहे वो कोर हो बच्चे, चाहे वो डिसिप्लिन हो, कोई भी एग्जाम चूज कर लेना, वो एग्जाम दे देना और आगे बढ़ चलना। Do not really think twice on that. एक एग्जाम में अगर आप फेल होते हो बेटे, तो आप दूसरा ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। चाहे वो कोर हो, चाहे वो डिसिप्लिन हो, किसी भी एग्जाम में अगर कोई स्ट्रगल आती है, तो यू कैन सिलेक्ट द अदर वन एंड जस्ट मूव ऑन। आपने डिसिप्लिन दिया, गॉड फॉरबिड आपका नहीं क्लियर हुआ, आपको लगता है मुझे डिसिप्लिन का दूसरा एग्जाम देना है, आप वो भी दे सकते हो। आपको लगता है मुझे डिसिप्लिन नहीं देना सर, मुझे कोर देना है, आप वो भी दे सकते हो। आपको लगता है मुझे पहले कोर देना है, बाद में डिसिप्लिन देना है, आप वो भी दे सकते हो, एंड वाइस वर्सा टू। The only thing that you need to know is that discipline exam मुझे सिर्फ एक देना है, मुझे दो नहीं देने हैं, come what may. Do not forget that. What is really important is that you should know as to what you really need to do from the standpoint of the examination. And guys, I just want to tell you out one thing very clearly. While I'm trying to make this, as laymanish as possible, and that is the reason I'm using more of Hindi into it. When you see our classes, when you see our sessions, when you see what we really talk on, it'll be more on the English side of it. We rarely try, and we'll try to use a very healthy mix of English and Hindi onto it. The only reason I'm trying to make it as laymanish as possible is just to make sure that you're able to complement and understand the same, and of course get going for yourself. What is really relevant for you over here is that we, as a takeaway from this presentation, you should be able to complement what is really happening from the 2024 standpoint. And you should be knowing that considering this, what should be my strategy in order to kill the exams in the best possible way. Now, another important point that really the slides gives away to you is that you should know that irrespective of the fact that which discipline exam you takes up, you have same CPA license. So CPA license has no I would say dependency on whatsoever discipline exam you take. You can take ICP, you can take TCP, you can take ISC, TCP or bar, you can take any exam. CPA license remains to be the same. There is no implication onto it. Another very important point, core exams, like what happens right now, you can plan out the CPA exams as and when possible. You can plan out that I want to give it in January, February, March, and so on and so forth. All the core exams can be given in any month. However, discipline exams will only be available for the first month of each calendar quarter.
So what does that mean? Effectively, what we're trying to say over here is that in Jan, Feb, March, discipline exam can be given only in January. For April, May, June, discipline exam is only available to be given in April, and so on and so forth. So discipline exam, which is bar, TCP, ISC, depending upon what you really want to choose on, is only available in the first month of each calendar quarter. You should have that at the back of your mind in order to ensure that you're not missing on to it. Is that clear? Yes, sir. Now, these are some really important pointers, my friend. I really wanted you to have at the back of your mind to ensure that you're not missing on what you really need to do from the examination standpoint. Is that clear? Yes, sir. Again, if there is any question, guys, do ping me. You can keep posting on the chat box. We'll be more than happy to pick that up and, of course, take this on. Now, before I really, jump on and, of course, give you time to ask questions to me, I just want to take it, a couple of minutes more to make sure that you understand as to who we are and what we do the way we do. FinTram Global is a global learning platform for transforming professionals around the world. And we are into various global qualifications. We are in US CPA, US CMA, ACCA, IFRS, and various other CPE courses. We are the approved channel partners for Becker Professional Education. And who doesn't know Becker? They have the best of the content available from the CPA standpoint. And we are proud to be their approved channel partners for Becker Professional Education in India. And that's what we always strive for in terms of giving the best to our students per se. Now, while we, of course, we have been into CPA for a long time. I've been a CPA faculty for almost like 2 decades now. We are I would say we have a very strong footprint and pedigree in terms of, working with some of the, I would say, renowned business schools as far as their CPA curriculum is concerned. So FinTram Global is proud, is really proudly partnering with, with business schools like XLRI, LIBA, EDII, CIMP, and many more in their, I would say, CPA journey, because they are really looking forward for, for having the right content and the delivery for their own students as far as the CPA curriculum is concerned. And FinTram Global is a proud, I would say, partner in the journey of their students in terms of their qualifying their CPA as soon as possible. Now, how does FinTram support? Just to make sure that, you get the perspective in terms of, what FinTram really brings onto the table. What we really have is that, we have very strong, I would say, platform wherein, there is an extensive pool that we have created for the CPA faculties. And that's what, one would relish when you really come onto the board in terms of the content that gets delivered. CPA has a very strong, I would say, need on the evaluation or the eligibility side. So what FinTram provides is that there is an exclusive support being available to all the students as far as their eligibility and evaluation is concerned, just to make sure that, their hand is being held right from the start, so that there is a pre-evaluation process that is to be done, is taken care. And then the evaluation, when it goes to NASBA, WES, or wheresoever, it is being taken care to make sure that, you get the best of the experience there, and make sure, you get the best of the advice there as to which state you should be sitting out from, for CPA exam as far as the US is concerned. You would also get the, I would say, considering that, we are the channel partner for Becker, you get the best of the world content, that really gets provided by Becker. So you get the, the 24/7 LMS, and that to artificial intelligence based, that really tells you in terms of, how much you have done and how prepared you are from the examination standpoint. And we take pride in saying this, that our LMS really tells you that this is something that you have done and this much you have, you are really prepared of. And this is something that you really need to do in order to kill this exam in the best possible way. So you would get the access to that content, the ebooks, the hard copy books, and whatnot. In addition to that, FinTram also provides you the juice notes, which is, I would say, one of the best in class notes to revise the content when you really sit for exams. So you get the best in class sort of juice notes per se, which you really need to revise the content in the quick go just before the exam, and of course, kill that in the best possible way. In addition to the revision boot camps that we do, wherein we practice question in the live format with the students, telling them where things are going wrong. You would also get a mock exam and the detailed performance review. You would also get, the support from our tech team in terms of managing the entire show.
And guess what? The icing on the cake is that you would get 100% placement assurance in terms of, what you can do once you have cleared your CPA exam. And of course, you getting placed to the top-notch multinationals and working over there. Is that clear? Yes, sir. Any question, guys, that you have, in terms of, what FinTram really offers, you can reach out to us. I am providing the details over here. You have our number, you have our, website details. Feel free to reach out to us and we'll be more than happy to pick that up and of course, answer any queries that anyone may have. That really brings me to the end, guys, in terms of, what I really wanted to cover, what I really wanted to, come over here and really talk on. But anything that you may have, anything that I can really help you out in terms of getting the resolution to your queries, I'll be more than happy to really, answer your queries. I can see some, being displayed on the live chat. I'll be happy to answer that first. Monty Singh says, what about the growth after US CPA, sir? Monty, I would say just go on the Google and type US CPA jobs, or just go on the Google and type what are the salaries for US CPAs. You'll be astonished, my friend, in terms of the salaries and of course the job opportunities that are available for US CPAs. You'll be astonished. There are multinationals, there are Indian multinationals, there are, US multinationals, European multinationals, there are big fours, there are investment banks, there are, I would say banks per se, there are asset managers and whatnot. All of them, they need this qualification because this qualification certainly brings a very different level of understanding and a delivery as far as that employee is concerned. And that is the reason, they treat CPA to be a very different individual, and hence the growth path is also very different, and the salary too. Let me, give you a perspective testimony to that fact is, I did my CPA when I was part of Wipro. I was part of Wipro Finance. I did my CPA over there. And once I did my CPA, within 10 years, I was the finance head for Wipro. And of course, after that, I was the finance head for BlackRock, one of the largest asset managers in the world. And then, I was the finance head for Boston Consulting Group. So that's the advantage, what these qualification really brings onto yourself when you have something like this, as a feather onto your cap. Eva says, hello, sir. Is it worth joining CPA now, or should I join it in 2024 after evolution? Eva, evolution has already happened, my friend. You join now or join in 24, you have to give the same subjects. Everything is same now. Had you been asking this thing to me, 6 months back, this would have been a question. But now this is no more a question, Eva. You can start your US CPA right now, right away, to make sure that you're able to clear it, as soon as possible. So, don't have to be waiting for anything. Murli says, can you please continue English, sir? Murli, I'm sorry, I missed on to that. I didn't read that on time, but I have ensured that whatsoever I could do towards the end, I've of course taken everything in English. But don't worry, all the classes that we do are in English, so don't worry on that. I just wanted to make sure that I didn't knew that who all are joining, so just wanted to have a mix of it. That was the reason we had English plus Hindi onto it. Mohammed says, dear sir, what is the institute what fees along with the Becker material? I would say, Mohammed, reach out to, I have provided the details over here, reach out to the team and they'll be more than happy to tell you in terms of, what the fees is. There is a fortunate time for yourself, considering that Diwali is on the card. FinTram is running, a Diwali, I would say, sort of Mela kind of a thing for the global education. So, you would get a different level of scholarship also if you want to pursue CPA right now. So do reach out to them, and I'm sure, they'll be able to help you as much as possible. Any other questions, guys, anyone may have? I hope this, this somewhat somewhere, session really helped you in terms of, knowing what is really happening in 2024 as far as CPA is concerned. But I've not seen the likes, guys. That's unfair, right? You have to at least give some likes to, for me to really know that, yes, things are going well for you and you're really understanding and appreciating what is being delivered over here. So can I not expect Mohammed, Murli, Eva, Monty, Senorita,
and of course Vijesh, and so on and so forth, many of the folks that are there on the call or on the YouTube, to really have the likes for ourselves. All righty, thank you. Guys, any other questions anyone may have? I'll be happy to answer, guys. Anyone? All right, Kusum says, can you please provide more detail about, more details about the exam and time frame for clearing the exam, sir? Okay, so Kusum, I'm sure you would have known by now that US CPA exam, you can appear for any exam anytime. So once you're ready, generally, it takes 3 to 4 months of time. I would say 4 months is a reasonable time to clear one exam. So once you study, and that's the methodology FinTram really follows, that we take one subject at a time. So we'll do 4 months. 3 to 4 months of study of one exam. You're prepared for it, you're done with it, and then you deliver that. Then you appear for the exam, you clear it, and then we go to the second one, and so on and so forth. So by that logic, within, let's say, 13 to 15 months kind of a time frame, everything gets done, and you're done with all of the 4 exams, and everything gets closed. That is the the generic time frame that we have in terms of clearing the exams. And if God forbid, if one exam is not cleared, then you can add 3 to 4 months more. But generally speaking, most of the students clear the CPA exams in 12 to 15 months of time. Kusum, does that help? Does that answer your question, Kusum? Priya says, is doing US CPA worth after CA? I did that, Priya. I did my US CPA after my CA, and I can tell you it did wonder to me. It did wonders to me. Not that CA is a bad qualification. Absolutely not. CA is an excellent qualification. But if you have a very different international feather onto your cap, it really opens up your toll gate to get into any and every corporate around the world. You actually have a seat at the table, right? Once you have a qualification that has a global recognition, you have a seat at the table in front of anyone and everyone. So, you can step into any US, UK, or any other international organization, because they would reckon this fact. They may not reckon your Indian CA, but they would, they would recognize the international CPA, the US CPA. They would say that, yes, this is what they need, and this is what they understand, and they would see value in yourself. And you getting selected onto those places, and you having a growth path onto those places really increases. That is one of the reasons, Priya, I can say that I got selected from Wipro to BlackRock, and then from BlackRock to BCG, and so on and so forth. So I do feel that there is certainly a value in having an international qualification, and CPA has a different value, considering it is a US one. Mohammed says US CPA and US Australia US CPA and CPA Australia are same. No, Mohammed, who said that? One is having a US qualification, one is having an Australian qualification. Both are absolutely different. Australian CPA is based on Australian standards, Australian norms. US CPA is based on US norms. Australian CPA would not have that kind of an acceptance as compared to US CPA. Of course, it is more to do with the US, right? US has a better acceptability around the world as compared to Australia. So both are really different, Mohammed. Which is better, sir, US CPA or US CMA? Very difficult. What is better, doing CA or a ICWA? You tell me. It is really a function of your liking too, right? If you're more on the cost side, you like more of the financial management side, CMA is one for you. If you're more on the accounting and reporting compliance side, CPA is for you. So there is no right or wrong answer. Both the qualifications are equally good. CPA is more on, more, I would say, generally accepted. CMA, has a limited acceptance per se, but both of them have their own pluses and minuses.
Arushi says, what are the advantage does the CPA, CPA course? One of the biggest advantage, Arushi, CPA is that, CPA opens up your toll gate to any and every MNCs around the world. It's a global passport, my friend. You can get into any corporate within India, outside India. You would have a very different level of salary. And of course, you would have a very different level of growth path for yourself. So that is the advantage. And of course, when the designation comes to you, when the money comes to you, when the companies comes to you, and when you see value for yourself within the organization, I think, all the answers for advantages are being taken care. Kusum says, is this exam based on pen and paper? No, Kusum, absolutely not. It is a computer-based exam. You don't have to use pen and paper in this. You just prepare for it. You sit for on the computer. You deliver, because most of the questions that comes in this exam, 60% of the questions are MCQ based, and remaining 40% is again typing based. So you have to type. You would understand the answer and then you would type. So then they call it task based simulation. So they'll give you the case to go through that case and answer questions onto that. So it is just not pen and paper based. All right. Anything, guys, anyone may have, I'll be more than happy to pick it up. I know we are just on time. I just want to, make sure that we're able to, answer your queries. All right. If there is nothing, guys, we will wrap it up over here. I hope this session was helpful to you. I hope we were able to, add some value to yourself as far as the CPA in 2024 is concerned. Do reach out to us. As I said, do subscribe to our channel, FinTram Global. If you really want to, keep getting these informative videos, do subscribe to our channel. And of course, if there is any question that I have not answered that you would want me to answer, put it in the chat box. We'll be more than happy to pick it up. You can also reach out to us, WhatsApp us, number I've already given. You can reach out to us. We'll be more than happy to pick it up and help you in your CPA journey. Because CPA bole to FinTram. That is what I wanted to cover, my friend. I'll see you again in the next one. Till then, this is Pankaj Dhingra.